Good afternoon, ladies and gentlemen. Mr. Sanjoy Roy, members of Teamwork Arts, and friends from the media. We are delighted to welcome you to our retro legacy hotel, Clarks Amer, where literature comes to life. It is with immense pleasure. Yes. It is with immense pleasure that we announce our continued association with the prestigious 17th edition of Jaipur Literature Festival. This year, we are honored to host a celebration of words, ideas, and creativity as the Jaipur Literature Festival unfolds within the vibrant nature of Hotel Clarks Amer. Our commitment to fostering culture and intellectual exchange aligns seamlessly with the with the essence of this renowned literary gathering. As we open our doors to authors, thinkers, and literature enthusiasts from around the world, we invite you to immerse yourself in the rich tapestry of ideas that will unfold over the festival days. Our aim is to provide a welcoming haven for the exchange of profound thoughts, diverse perspectives, and the sheer joy of literature. Hotel Clarks Amer stands as more than a venue. It is a partner in the cultural dialogue that Jaipur Literature सिद्धांतों पर हमारी संस्था, हमारी फैमिली खड़ी है और हमें गर्व है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी इन्हीं सिद्धांतों पर बनाया गया है। इसलिए हम लोग इसके शुरुआत से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी वासुदेव कुटुंबकम के रास्तों पर चल रही है। आपने G20 का भी स्टेटमेंट देखा होगा, उसका भी मिशन वासुदेव कुटुंबकम ही था। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे and we are proud to partnering with you as well. Thank you. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं खड़े होके बोलूं या बैठ के बोलूं कि कौन सा अच्छा है? ये ठीक है। पूरे साल तो हम इसी कारण से इंतजार करते रहते हैं, पूरा दुनिया तो घूमते रहते हैं हम JLF को लेके, पटोरी में बांध के, स्पेन कभी तो अमेरिका, कभी तो एडिलेड, कभी तो मालदीव्स, कभी। पर यही चीज़ के लिए हम इंतज़ार करते रहते हैं कि जनवरी आए तो हम जयपुर में पधारे और आप सबके साथ हम जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल शुरुआत करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 सीरीज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल फॉर इट्स 17th एडिशन। और क्योंकि आप लोग हर वक्त पूछेंगे मुझे ना एंड में कि इस साल नया क्या है, मैं पूरा नया चीज़ ही बता देता हूँ कि क्या क्या है ताकि वो पूछना ना पड़े। तो इस साल 550 ऑथर्स आएंगे हर अलग अलग देशों से और इंडिया से। 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस में चर्चा होगी, ऑफ विच 16 विल बी इंडियन लैंग्वेजेस। मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, 16 इंडियन लैंग्वेजेस है इंक्लूडिंग राजस्थान, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे आपने तो कोई भी इंडियन लैंग्वेज का वो नहीं दिया, कोई राजस्थानी राइटर को नहीं बुलाए। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ 16 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग राजस्थानी विल बी एट द फेस्टिवल, जिसमें से 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होंगे। इस साल हमारे पास जो इस साल का बुकर प्राइज विनर है पॉल लिंच, वो आ रहे हैं। पिछले साल का जो बुकर प्राइज विनर है डेमन गैलगट, वो पहले बार आएंगे। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विनर है जॉर्जी गॉस्पोदिनोव, वो आ रहे हैं इस साल, फर्स्ट टाइम कमिंग टू इंडिया। उसके अलावा पुलित्जर प्राइज के साथ रॉजर कोहेन, हर्नान डियाज और टाई बर्ड
शायद आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी ओपेनहाइमर जो जिस किताब के आधार पे ओपेनहाइमर लिखा गया है वो काइबर्ड है, तो वो भी आ रहे हैं। इस साल का जो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जो अवार्ड होगा वो हम पहले से अनाउंस करना जा रहे हैं, तो पूरा ज्यूरी ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि अरुंधति सुब्रमण्यम को 2024 का महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड को हम पेश करेंगे। द ज्यूरी, एज यू ऑल नो, includes luminaries, including people from the Mahakavi Sethia site, Ranjit Hoskote and Shukrita. उसके बाद अलावा जयपुर बुकमार्क, जैसे आप लोगों को पता है कि जो B2B हमारा जो बिजनेस टू बिजनेस का जो पब्लिशिंग के बारे में होता है, and that's really become Asia's biggest business session with delegations coming from across the world, Spain, Australia, UK, France, Germany, New Zealand, Australia. तो वो 5 दिन के लिए होगा यहीं पे। उसी के लिए 93 स्पीकर्स आ रहे हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग इंडियन स्टेट से। जयपुर म्यूजिक स्टेज, विच एवरीबडी आई थिंक इन जयपुर लव्स, सब देखते रहते हैं कि इस साल कौन आएगा। So this year, of the 3 days of the Jaipur Music Stage, which we will have here at Clarks, और जैसे आप लोगों को पता है कि चलो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो आप क्लार्क्स में आए हैं, 3 साल हुए हैं, बट 10 साल से जयपुर म्यूजिक स्टेज शायद क्लार्क्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें इस साल हम प्रदीप आ रहे हैं, हरप्रीत आ रही है, टपी प्रोजेक्ट होगा, व्हेन चाय मेट टोस्ट वो आ रहे हैं। और मॉर्निंग म्यूजिक में एज मेनी ऑफ यू नो, जो मॉर्निंग म्यूजिक हमारा होता है, दैट्स प्राइमरीली वी लुक एट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। तो इस साल दोनों इंटरनेशनल म्यूजिक भी होगा एज वेल एज इंडियन क्लासिकल, और उसमें खास करके 100 years द सेंटिनरी ऑफ कुमार गंधर्व सेलिब्रेट करेंगे। तो कलापिनी कोमकली जो उनके डॉटर है वो आएंगे टू ओपन द फेस्टिवल ऑन द ओपनिंग डे विद दैट। सेशंस तो जैसे आपको पता है कि द थीम्स आर फ्रॉम ऑल अक्रॉस, वेदर इट्स विद ट्रैवल, एआई के ऊपर काफ़ी कुछ है, एआई एंड मैथमेटिक्स, कोडिंग, हेल्थ के ऊपर कई सेशंस हैं, खास करके as we do every year, environment के ऊपर कई सारे सेशंस हैं। और जो हमारा प्रयत्न रहा है ना लास्ट फ्यू इयर्स से, कैन वी मेक द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ग्रीन, कैन वी इंश्योर दैट वी हैव लेस कार्बन फुटप्रिंट, एंड कैन वी मैनेज आवर वेस्ट हियर इन जयपुर, क्योंकि इतने हजारों लोग आते हैं, सो हाउ कैन वी मैनेज दैट। तो एक तो वी स्टॉप्ड डूइंग अ लॉट ऑफ द प्रिंटिंग, तो ब्रोशर तो आजकल प्रोग्राम ऑनलाइन ही होता है, सो देयर इज अ बचाव देयर। दिस ईयर विद द यूनाइटेड नेशंस वी हैव साइंड ए मेमोरेंडम एंड एमओयू, जिससे हम कोशिश करेंगे कि दैट वी विल ब्रिंग दिस डाउन टू वेस्ट न्यूट्रल एंड वील ब्रिंग इट टू कार्बन न्यूट्रल। तो अर्थ डे हमारा एक पार्टनर है, जिसके साथ हम वी डू अ होल tree planting program with the new organization Suraj. With EcoWrap, we are hoping to create a whole waste management system, which Apur, you know, your colleagues can also learn from. ये हम audit करेंगे and we'll release the report at the end of the day. And of course, with our new partners as well, and I'll talk about them a little later, we will also be running a whole green program here in Jaipur. उसके अलावा as you all know, every year हमारा यही कोशिश होती है कि the festival becomes nicer, the experience is better. जो भी हमारे guests आते हैं अलग अलग देशों से, across from India, they enjoy जयपुर की hospitality, आपका खाना, आपका खातिरदारी, आपके जो hotels हैं, आपके amazing heritage sites.
4 तारीख को राजस्थान टूरिज्म के साथ हम हमारा हेरिटेज इवेंट जो आमेर में होता है वो करेंगे। इस साल उसमें तनुश्री शंकर जो कलकत्ता के जाने माने डांस प्रोडक्शन है वो आ रहे हैं अपना नया प्रोडक्शन लेके। जयपुर से ऑफ कोर्स विश्व मोहन जी भट्ट जी भी बजाएंगे as part of the heritage program, and the closing of course will be here. The debate will be on the right to privacy, जो debate सबको बहुत पसंद आता है, तो this year's debate will be right to privacy. Two big announcements. One is जैसे मैंने कहा the festival is called the Samsung Galaxy Tab S9 Jaipur Literature Festival. They are our new naming right partner, and we hope that we will have a continuity with them over the years. And at the end of last year's press conference मैंने ये कहा ना कि हमारा जो जुड़ाव है राजस्थान और जयपुर के साथ वो बड़ा था, because our younger son got married here in Jaipur. This year we're very glad to welcome on board the Sanjay Agarwal family office. उन्होंने टीम वर्क के साथ जुड़ के we're doing a new collaboration. They are our new investors here, and we hope that with their support, teamwork continues to grow. We can create wealth for the arts, and I'm absolutely delighted that Govind Sabu, the advisor to the Sanjay Agarwal family office, is here. Govind, welcome to your first Jaipur Literature Festival press conference formally. With him, the head of communications at AU Bank, as आप सबको सब कुछ पता है कि Sanjay Agarwal set up AU Bank, and it's really over the years has mushroomed into an incredibly respected bank in the country, not just in Jaipur. But it began here, and I think we also began here. लोग सोचते कि हम इंटरनेशनल ब्रांड है, पर शुरुआत तो जयपुर से ही हुई। तो ये जो नया हमारा रिश्ता है, we hope that together we will create more opportunities here. Festival के वक्त we will have a press conference with City Palace to announce a new festival, but you'll have to wait for that. वो announcement फेस्टिवल के दौर होगा। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि GLF जो है, जो हमारी इंटरनेशनल जो ब्रांड है GLF, जैसे आप लोगों को पता है कि वी आर इन लंदन, इन अमेरिका, इन द मिडल ईस्ट, इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन अदर प्लेसेस। पिछले साल हमने स्पेन को जुड़ा। वी हैड GLF Valladolid and GLF Madrid in Spain. इस साल, meaning in 2024, we're announcing another extension of GLF. I think it'll be the 10th or 11th, मैं भूल जाता हूँ. It'll be GLF Seattle. So GLF Seattle will be our first West Coast में GLF का introduction. Again, we are delighted that the people from Seattle, which is the Seattle University Dean, Sital Kilantri, will be here to be part of the press conference announcing that. We're very excited about this new development. क्योंकि जो हम Seattle में करेंगे, it also extends and welcomes people from Vancouver, Canada. तो वो भी एक extension होगी जयपुर का, JLF का in different parts of the world. We may have another extension at as JLF UNC. Which is North Carolina, but वो अभी भी it's in the works, and we hope to announce that maybe during the festival. And just to end, teamwork, आप लोगों को पता है 33 annual festivals, 72 cities in 19 or 20 or maybe 21 different countries. पिछले साल हमने 2 नया फेस्टिवल शुरू किया। एक था द सेक्रेड अमृतसर, हमारा नया फेस्टिवल Awaken Florida in Florida near Tampa, which was very successful. This was last year was the second year of Awaken Florida. Going forward in 2024,
we hope to introduce two more new festivals. One will be in Dubai, which is called India by the Creek, as part of our India series. जैसे आप सबको पता है, where India by the Bay in Hong Kong, India by the Bosphorus in Turkey, India by the Nile in Egypt, India by इंडिया बाय द बे हो गया. एनीवे व्हाटएवर, आप वेबसाइट पे देख लीजिए. सो वील बी एडिंग इंडिया बाय द क्रीक, which is in Dubai in March, and we hope to add maybe 2 new festivals during 2024. So we look forward to a really fantastic year. We look forward as usual. देखिए, जो फेस्टिवल जितने लोग आते हैं यहाँ पे, तो उसका जो चर्चा होती है, उसके बारे में जो बातचीत होती है, यहाँ पे तीनों चीज़, जो डिबेट होती है, जो डिस्कशन होती है, और जो डिसेंट भी होता है, यहीं पे होता है. पर इसका जो जिम्मेवारी आप लोग लेते हो कि इस चीज़ को फैलाना, बाहर लोगों को लोगों तक ये पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेवारी है. हम आपको सौंपते हैं. हम मानते हैं कि आपके बिना ये फेस्टिवल तो हो ही नहीं सकता. जितने बड़े तरीके से ये फेस्टिवल दुनिया में अब बन गया है, इट्स द ओनली इंटरनेशनल आर्ट्स ब्रांड इन द वर्ल्ड with the kind of reach that it has literally across the 4 continents. It's a celebrate for Jaipur, for Rajasthan, for India to celebrate, and also to celebrate the fact that India's new economic development, India's new space or status in the world. G20 तो अभी खत्म हुआ. पिछले साल अमिताभ कांत जो उनका शेरपा है, वो भी होंगे इस वक्त. कई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने सेशन रखा है. आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस चौहान भी रहेंगे, जस्टिस मदन लोकूर, चीफ जस्टिस मुरलीधर फ्रॉम द उड़ीसा हाई कोर्ट was really celebrated, and the new book, The Court on Trial, again by Sital Kilantri and Aparna Chandra, उसके बारे में भी डिस्कशन होगी. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक प्यारा सा सेशन 3-4 हमने रखा है. एक तो मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर 2023 में 35,000 यंग पीपल कमिटेड सुसाइड. ये जो मेंटल हेल्थ इशू है, इट्स अ टिकिंग बॉम्ब इन इंडिया. वी नीड फार मोर फोकस ऑन इट. जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ यंग पीपल हु हैव टेकन देयर लाइव्स. It's one of the highest rates in the world. तो उसके ऊपर, उसके आधारित मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने खास करके सेशन डाला है. As we know, 3 to 7% of India's population suffers from some disability. लोग सोचते हैं कि कुछ लोग जो जिसके पास डिसेबिलिटी है वो विकलांग है. नहीं, at some point of time all of us suffer disability. When we grow old, we have a problem because we're not able to walk. We lose our sight, we get cataracts, sometimes we lose our hearing. All of us, the entire population, at some point of time faces disability. तो हमने खास करके disability के ऊपर सेशन रखा है. We also have Professor Anil Taneja, who's can't see. He'll be talking about some of the issues around the big book that he's done. And like I said, last but not least, one of the things we do the festival for is to build empathy. आज की दुनिया में तो, and for all of us, our immediate reaction to anything is थप्पड़ मारो, बाहर बैठो, गाली गलोच दो. But our immediate reaction should be to have a sense of empathy. जिनके पास कुछ नहीं है, उनके बारे में सोचे. जिनके पास सब कुछ है, वो भी बाकी लोगों के बारे में सोचे, कुछ दे. So one of the sessions that we have, and Timmy, जो अपूर्व के wife है, partner है, she runs a wonderful program here, which is around animals. So we have a beautiful session on animals. We've got somebody who's written, Sanjay Jha, जो पहले कांग्रेस के spokesperson हुआ करता था. उन्होंने खास करके beautiful किताब लिखा है on the loss of his dog. And then we have Gurbir from Punjab talking about his dog and his cat. So we have this lovely session on animals, which I hope you all will do. मैंने तो मेरे कॉलीग से कहा कि उस दिन क्यों नहीं सब अपने डॉगीज, अपने कैट्स को लेके आए.
ऑफ कोर्स आई वाज शॉट डाउन इंस्टेंटली. सबने कहा क्या क्या कह रहे हो कि साफ कैसे करेंगे. ऐसे ऐसे क्या बात है, घोड़े भी लाए, हाथी भी लाए, सब कुछ आए. आफ्टर ऑल इट्स आमिर. पर ऑफ कोर्स आई बीन शॉट डाउन. एज यू नो, मेरा कोई राइट नहीं होता है कुछ सजेस्ट करने में. पर आप लोग जरूर आइएगा. एंड लुक फॉरवर्ड टू होस्टिंग यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ Sharupa and Suraj and all our colleagues at Teamwork, and Sudhir is sitting here. Welcome. A big thank you and shout out to Jags. All of you know that Jags is the superstar, and he's been, I think, involved with the festival, not just the 17 years of the Jaipur Literature Festival, but also the Virasat Festival before that, Jags. So in many ways you represent everything about culture in this city. So thank you so much. We will welcome the Deputy Chief Minister, Diya Singh, on one of the days, and hopefully she will be here. I think both on the first they are busy. Diya ji is going to be perhaps in Delhi, and the Chief Minister is going to be at the Stone Mart. But we look forward to welcoming everybody else. We also have a session by Manmohan Vaidya. उनके नए किताब के ऊपर एक session है. I think it's on the या तो 3 तारीख के है या 4 तारीख. आप गूगल कर लीजिए प्रोग्राम में, वो आपको पता चल जाएगा. थैंक यू. हैप्पी टू आंसर ऑल क्वेश्चंस. एक चीज मत पूछना नया क्या है उसके अलावा. मिस्टर रॉय, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो साहित्य का महाकुंभ माना जाता है और पूरी दुनिया में अच्छी चर्चा है और युवाओं को एक नई दिशा मिलती है. अब मेरा सवाल ये है कि आपने सारी चीजों पे चर्चा कर ली, पर देश इस टाइम एक नया साहित्य पढ़ रहा है, वो है राम. तो क्या इस जेएलएफ के अंदर राम नहीं होंगे? राम तो हर जगह है. जेएलएफ में होंगे? एक सुन लो, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं जवाब तो दूं. राम तो हर जगह होगा, हर जगह है, हर चीज में. 4 सेशंस खास करके है. वन इज, जैसे आप ही ने कहा तो आपको पता है कि रामचरितमानस में हर साल हम कुछ ना कुछ करते हैं. तो लूटनडॉर्फ ने जो पूरा रामचरितमानस का ट्रांसलेशन किया है, उसका जो लास्ट वर्जन, लास्ट बुक है, यहीं पे रिलीज होगा. एक गोल्डन वॉल्यूम रिलीज होगा सेशन में. उसके अलावा नमिता गोखले का जो नई किताब है इज गोइंग टू बी ऑन लक्ष्मी. अबाउट हाउ व्हाट डज लक्ष्मी मीन. हम लोग सोचते हैं लक्ष्मी इज only the goddess of wealth, but as we know, Lakshmi is much more than the goddess of wealth. Devdutt Patnaik is going to do a session on the myths around Jainism, and of course we've got Amish, author Amish Tripathi is going to talk about his new book. लोग सोचते पूरा दुनिया में कि we are idol worshippers, but ये idol का मतलब क्या है, उसके बारे में अमीश भी बात करेंगे. So इस तरीके से, जैसे मैंने कहा, राम तो ट्री में भी है, यहाँ पे भी है, हमारे अंदर में भी है. पर यस, वी गॉट सम सेशंस ऑन राम. पर जो आपने उससे पहले जो बोला था ना स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे आप सबको पता है कि 80% जो लोग आते हैं हमारे फेस्टिवल में ऑन ग्राउंड हैपेंस टू बी बिलो द एज ऑफ 25. और क्योंकि दिस इज द 17th एनिवर्सरी ऑफ आवर फेस्टिवल, हम जो प्रथम बुक्स के साथ एक हम आउटरीच करते हैं, इस साल विल बी रीचिंग आउट टू अबाउट 110 schools between Delhi and Jaipur. And these are schools, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे schools तो आते हैं जिसके पास बस है या फैसिलिटीज है, पर कई schools है जिनके पास कुछ नहीं है, वो हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते. तो हम राइटर्स को ले जाएंगे. 110 सेशंस शायद आज शुरू हुई या कल, आज शुरू हुई थी ये आउटरीच प्रोग्राम. इट विल रन राइट थ्रू द फेस्टिवल. मैं तो ये हर साल कहता हूँ कि पीपल लाइक अस फ्रेम द प्लैनेट. द फ्यूचर जनरेशन इज रियली यंग पीपल. देन परहैप्स दे विल बी एबल टू, थ्रू दैट कंसिडर्ड इंफॉर्मेशन, remove ignorance or push back on ignorance. And why is it important to push back on ignorance? Because ignorance primarily leads to hatred. ये किसी और है, कोई और है, कोई दूसरी जाति का है या दूसरा रिलीजन का है. And by pushing back on hatred, you can push back on violence. Today across the world, what we are seeing, whether it's in the Middle East or in Europe or in Africa,
we are seeing all of this huge amount of horrific violence, and I think हर जन का responsibility है to ensure that people and children don't die. जब मैं देखता हूँ ये जो photographs आते रहते हैं ना कि इस बच्चे की ऑपरेशन हुई है या amputation हुई है without anesthesia, I don't know about you, मेरा तो दिल it's horrific. So we hope that some of this information goes across. There are sessions on war, on climate crisis, etc. that will also be there. Shall I go to the seat or shall I continue to stand? Sanjay ji, this is Shrikant from Times of India, Jaipur. Shrikant, I can't see you. Oh, I can see you. Yes. ये ठीक है? You mentioned about onboarding Sanjay Agarwal and his family office to Teamworks. So, in what capacity you have onboarded him, and what he brings to the Teamworks? This is one question. And next, you said that you are going to have an association with City Palace. So, what is going to be that association, which you would be giving out details during the festival? But is it going to be a festival again? And my third question is, why you have failed to bring one novel laureate this time to the edition? So second question first, जो सिटी पैलेस के साथ हम शुरू करेंगे, एक नया फेस्टिवल है, पर उसके लिए आपको रुकने पड़ेगा. You'll have to wait for the announcement. Nobel laureates, तो we don't own them. We can invite them. इस साल we were supposed to bring a Nobel laureate, but उनका जो किताब था थोड़ा पुराना था, उसीलिए we didn't think perhaps that this year we would do it. But because we've got so many Booker Prize winners and Pulitzer Prize winners, we decided that's more than enough. Finally सीमित है ना, जो जितने सेशंस हैं हमारे पास, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाती है इतना प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो है. And first question जो आपने कहा, we've been looking, हमारे में in Teamwork we had an investment by Ambit Pragma which happened 9 years ago. तो Ambit Pragma को अभी उसमें exit करना था. जो Ambit Pragma का जो फाउंडर थे राजीव अग्रवाल, जो बहुत हमारे करीब थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो सैडली कोविड के टाइम पे उनका मृत्यु हो गया. He had gone out for a run and sadly he died. So Ambit Pragma didn't have a founding person, so they had to transfer that. And we've been for a while looking for somebody who would be strategic. We were very, very excited when we began our conversation with Sanjay Agarwal for 3 reasons. Primarily because he's from Jaipur, उनकी शुरुआत जो हुई थी जयपुर से हुई थी. Second, he's seen as a trusted brand. He's created from nothing in a very short period of time. शायद 2013 में he wasn't what he has seemed to be today. 10 साल में जितना कुछ उन्होंने प्राप्ति की है. Recently, I think if I'm not mistaken, Saurabh, you all acquired yet another bank, and you're one of the 4 or 5 banks out of the 11 that received their licenses who are still standing and doing extremely well. So we thought, देखिए हमारा जो strength है arts में है, festivals बनानी है, knowledge space में है, innovation space में है. इनका strength है finance, finding the resources. So it's a great fit. We don't step on each other's toes. We can work together. And when I met Sanjay Agarwal, Sudhir, when did we first meet Sanjay Agarwal? 2016 उन्होंने जयपुर म्यूजिक स्टेज शायद स्पॉन्सर किया था. उस वक्त एक डिनर पार्टी में हम मुलाकात हुई. एंड आई वाज वेरी टेकन कि इतनी अच्छा पर्सनालिटी, जिस तरीके से वो बात करते. ज्योति उनका वाइफ, अब शायद मुझे पता नहीं आप उनसे मिले हो कि नहीं, बहुत अच्छा खाना बनाती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से हमें हॉस्पिटैलिटी देती है. सो वी गॉट ऑन वेरी वेल. इन समथिंग लाइक दिस, देखो हम तो बैंक नहीं है, ना तो हम कोई बिल्ट इंडस्ट्री टाइप है, ना तो हम सीमेंट बनाते हैं, ना ज्वेलरी बनाते हैं. हम तो नॉलेज के ऊपर ही काम करते हैं और आर्ट्स उसकी इंटरसेक्शन में है.
So it's very important for us to have a mindset match. So it wasn't an easy discovery.